So over to you, Amit. Thank you. Hello, can you hear us? Can you hear me? Yes, clearly yes. Right, so I have been told this is that rare session which we have to wrap up in 20 minutes. Now, earlier this week, I released an episode of my podcast that was 10 and a half hours. So this is God's punishment to me. And as we have just 20 minutes, I think, both of these wonderful people. We won't get into a lengthy introduction, but just get straight to, I mean, I won't do a Karan Johar rapid fire, but the closest thing to that. Rakshanda, I want to start with you. In your beautiful book, Love in the Time of Hate, you start by, with these heartbreaking paragraphs about the crushing fear that you feel at this age, despite all the privilege. You speak about being more scared than you have ever been in your life. You speak of an almost persistent depression like a low-grade fever, right? And it was kind of heartbreaking, and all of this, of course, from the realization of what it means to be Muslim in today's India. And something that we discussed in our episode, we did a 4.5-hour episode, so please listen to that. But one of the things we discussed there was the big realization I had in the last few years that all of us grew up in these English-speaking elite urban bubbles, and we thought that we are the norm, ki secular, tolerant, liberal India, we are the norm. And there are others who might be bigoted, but they are the fringes. And today, sitting here, I realized that we are the fringe, right? So I'd like your views on this, that was it always thus? When did you begin to feel this gradual growing depression and fear and the change in the mahal? Amit, this is not a good time to be a minority in India. A religious minority, a thinking person, it could be Adivasis, it could be LGBTQ, people with alternative sexuality, any kind of minority. I think there is a regime, there is a thinking, there is a worldview that is pushing you to the margins and does not want you to have your space under the sun. You've asked me a bunch of questions, really. The fear and the depression you allude to definitely goes back to the past 8-10 years. But if you were to ask me for a defining moment when I began, my forefathers were born in this country, I've always thought of India as my home, but a time when I began to notice an othering, I would say it was the 90s, very clearly. I would even go so far as to say it was Mr. Advani's Rath Yatra that drew a chasm in this country. It was a defining moment for many of us, and I'm 61 years old, so those of you who remember the 90s would recall that it was a time when resources were mobilized in a very large way to drive home the point of othering. And from the 90s, it was a juggernaut that has been rolling, and of course, the 2014 election, the 19 election, and then 2024. So that has been there. But the fear that you refer to, that I talk about very openly in my book, is fairly recent. And the fear manifests itself in many ways. You think twice before putting your name on a nameplate on your door. You say twice before saying Khuda Hafiz to a relative in a train. You say, you think of many things that you have never thought of, that you're not conditioned to think of, but you are thinking now. Vikramjit, you've introduced a bill against hate speech in the parliament. And I think what would happen for people like you and me is that we realize this a little later than our Muslim friends, right? I often say that men, especially privileged men like us, we walk around in the world not aware of the layers of awareness that different kinds of people have. Like women, when they walk a street at night or they enter a lift alone, there's an extra layer of awareness. For Muslims also, there is a layer of awareness just in a simple fact of saying Khuda Hafiz. So I'd like to know your journey through sort of realizing what is happening around us in society and therefore coming up with the hate bill. Ki jab aapne hate bill ko introduce kiya, what drove you to it? Yeah, Amit ji, as Rakshanda ji have said, I would say that in 21st century, our younger generation or we, who will buy out that you are discussing in the social media, like what you wear and what faith you follow in the morning, what you eat, what you dress up, as Rakshanda is saying, what you speak, Sat Sri Akal or Khuda Hafiz or,
whatever. This is a lot of, intolerance. I'll give you like 4-5 examples, which all of us know, but I will be very candid to flag them. We had a case of a young cricketer from Mohali, Arshdeep. A few months back, he lost a catch. And you would have seen, I have seen on the Twitter, people are trolling him with word K. What the hell a player has to do? A catch छूट गया उससे, अब उसको K बना दिया. What the hell is going on? Air Chief Marshal AP Singh, अभी 1.5-2 महीने पहले, वो बेचारे बोल रहे हैं भाई we should have offset, we should reduce our imports of defense and we should have, indigenization. उस पे ट्रोलिंग चल रहा है. उनको एयर चीफ मार्शल, इंडिया के एयर चीफ मार्शल को साहब के आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड के. अब डू पंजाबीज और सिख्स नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म? अब उनको वो सुनाओ कहानी पार्लियामेंट में 132 शहीद हुए, देवर 92 वर पंजाबीज, ये हुआ कारगिल. इट्स अ फुटाइल. डू वी नीड बिकॉज ऑफ सम फ्रिंज एलिमेंट्स 0.001%? बट व्हाट अर्शदीप और दिस AP सिंह, और दूसरा हेट्रेड ही हेट्रेड है, इंटॉलरेंस. फिर मैंने देखा जब ये टेंशन बढ़ रही है, एक यू मस्ट हैव सीन ए यंग गर्ल गुजरात से, वो गोल्डन टेम्पल आई, पहले दिन उसने सारा दर्शन किए, लंगर, अगले दिन योगा डे था, उसको पता नहीं था, उसने ऐसे कोई योगा का करके उसने सोचा हरमंदर साहब इज आइकॉनिक वंडर हेरिटेज प्ले, पिक्चर खींच ली. लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो फिर वो लड़की ने अपोलोजाइज किया. शी सेड भाई मेरे से गलती हो गई. फिर देन आई रोट टू SGPC, जब वो कह रही है मेरे से गलती हो गई, तो ठीक है, इसको ओके, अब आपके सेवादार, देयर आर सो मेनी वेज. फिर वो खत्म नहीं हुआ. अभी मैंने जून में देखा कोई, क्योंकि ये सो मेनी पीपल मेक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली इन आवर पंजाब, वो कोई कई टाइप की सेना बनी है. एक बंदा वीडियो पे कह रहा है, मैंने DGP साहब को बोला, वो कह रहा ब्लू स्टार पे वाले दिन जो है जून में वो लड्डू बांटने चाहिए ओपनली. अब उससे टेंशन नहीं पड़ेगी. मतलब ठीक है, वी कैन डिबेट इन दिस फोरम कि वट एवर हैपन ब्लू स्टार जस्टिफाइड था नहीं था, उसका वो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकता है कि वॉज PM डिड द राइट थिंग टू इवैक्यूएट, के दिस वॉज द मीन्स और देयर वॉज अ बेटर मीन. पर ब्लू स्टार पे लड्डू बांटो, ये करो, दिस इज intolerance is so much growing कि कोई कुछ, and social media, therefore I thought one day कि हमने private member bill I introduced in the parliament, our team Ramneet is here, Gurbir Sandhu is there, हमने 84 शायद hate accounts का research करी, we make a dossier, I put it on the table of the parliament, I laid the 84 accounts, मैंने कहा ये देखो, because I had met the DGP said नहीं सर ये वो एक thin line है, हमारा ये IT एक्ट है जो 2000 का है वो अमेंड नहीं हुआ, ये थिन लाइन है, ये हेट स्पीच में नहीं आते, ये बच जाते. मैंने कहा आप FIR क्यों नहीं करते ऐसे लोगों पे जो हेट लिखी जा रहे हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं. अगर आपको एक फोन लेना है, फोन लेने के लिए यू नीड ए आधार कार्ड. कैन यू टेक ए सिम विदाउट ए आधार कार्ड? लेकिन इफ यू हैव टू मेक फेक अकाउंट ऑफ ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप 10 अकाउंट बना लीजिए, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, और वो कड़वापन, हेट्रेड फैलाई जा रहे हैं. सुबह उठो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, कोई चेक नहीं है. मैंने कहा उनको नोटिस दो. व्हाई नॉट आधार कार्ड फॉर मेकिंग ए अकाउंट? फोन का सिम कार्ड लेने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अकाउंट और आप जहर उगल रहे हैं, यू आर जस्ट पॉइजनिंग द माइंड. तो इस टाइप का ये कौन बाय करेगा? आप क्या पहन रहे हैं, आप सुबह किसको आप मानते हैं, शाम को मेडिटेशन, दिस इज अ प्राइवेट अफेयर एंड वी शुड हैव. और कोई धर्म कोई कैसे नहीं सिखाता. उर्दू में जैसे रक्षंदा जलील जी ने तो बहुत अच्छी पोइट्री लिखी, आप ज़रूर इनकी बुक लीजिए. मैं अभी आफ्टरनून में बहुत सारे मैंने शेर पढ़े, लेकिन ये शेर आपकी उस किताब में पता नहीं है कि नहीं, कि भाई क्या सोचे थे, क्या बना बैठे, मंदिर बना बैठे, मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे हैं आकाश के पंछी, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे. थैंक यू. एक शेर मैं भी सुना दूं? प्लीज. इस किताब में तो नहीं है, एक और किताब में है, सुनिए. चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. ये भी सोचने की जरूरत है. तो जैसे रक्षंदा जी ने कहा, दर्द, अब ये सिचुएशन आ गई है
जैसे हैरी जी कह रहे थे कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, अब सचमुच की कोई सहर दे। अब इस देश को कोई सहर दे, कोई इसमें लाइट आए। जो गुरु नानक और भगत कबीर ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। पढ़ रहे हैं हम, फॉलो कोई नहीं कर रहा। थैंक यू। This is beautiful, and you know, Rakshanda ji in her book talks about the importance of poetry and poets. You know, you quoted Ursula Le Guin as saying, poets are realists of a larger reality. And in a sense, we just got a kind of a beautiful glimpse of that love in the time of fate indeed. Vikramjit ji, can you tell me a little bit about what does a bill do? Bill mein hai kya, and you know, what it's aiming for? No, I had demanded that there should be, ये जो Information Technology Act 2000 है, वो एक रिडंडेंट हो चुका है, और इसमें हमने कई पहलू दिए हैं। एक तो ये आइडेंटिटी का दिया है कि नोबडी शुड बी अलाउड टू मेक ए सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट अ पासपोर्ट और आधार कार्ड। आई थिंक 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व। आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन मैंने ये 84 हेट अकाउंट्स रखे, आई थिंक विद इन 1 वीक ही 42-43 अकाउंट बंद हो गए अपने आप ही। बिकॉज जो खुराफात करने वाले हैं ना, उनके कोई पैर नहीं हो। उनको पता है कि अब पार्लियामेंट में लेट हो गए, एक्शन हो गया, आधे तो ऐसे ही छोड़ गए। बाकी सिट बन गई पंजाब में और FIRs होने लग गई। अब तो मैंने 3-4 महीने में इतना नहीं देखा कोई लड्डू बांटो। सर एक पंजाब में अभी जो पीछे बाढ़ आ गई, हम लोग वहाँ घूम रहे हैं, वो वहाँ पे एक कोई अखौती सेना, ये कोई क्रेडिबल सेना वाले नहीं है, कोई सेना बना ली सिक्योरिटी ले। वो कह रहा है किसानों को कि भी तुसी मंगते सी ना इंद्र देवता तो पानी, अब देखो संभालो पानी, रखो पानी। यू आर इंसल्टिंग योर फार्मर। तो एक तो उसमें ये रखा है, और दूसरा कि इस पे जो भी करता है उस पे FIR हो, और फिर सख्त से सख्त वो सज़ा हो। इसका कोई, मैंने कहा कि जैसे रेगुलेटरी कमीशन है, इसका भी हेट स्पीच का जो ये सोशल मीडिया का देखो फिल्म भी कोई सेंसर करता है ना, अब इमरजेंसी मूवी है, चलो जो सेंसिटिव पार्ट है हटा रहे हैं। यहाँ तो कोई हटता ही नहीं, सुबह खोलो लोग। और फिर ज़्यादा मैं कहूँगा कि हम वी शुड हैव द ओनर्स। आज हमें, बिकॉज खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल इज़ ए बेकन लाइट, यहाँ पे हर टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस होता है। अभी हैरी दौल जी डेमोक्रेसी कह रहे थे, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, आजकल जो डेमोक्रेसी है ना, जो अब्राहम लिंकन का था, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द बाय द, ये तो सब पता है। राहुल जी आजकल बन गई है FAR फॉर द पीपल, OFF ऑफ द पीपल, एंड BUY बाय द पीपल। तो हमें ये अब्राहम लिंकन का सिनोनिमस ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड न्यू, ये मेरे ये। तो हम लोगों को आज ये वी हैव टू वो कि भी वी विल नॉट फॉलो, वी विल अनसब्सक्राइब दीज हेट अकाउंट। जहां कोई ये बात अलग करने की कर रहा है, वी शुड अनफॉलो। एंड जो व्हाट्सएप पे ये AI मेटा व्हाट्सएप तो ऐसे चलते हैं रात को, जो सेंसेशनल व्हाट्सएप आता है उसको फॉरवर्ड, वी आर रिस्पॉन्सिबल, लेट्स नॉट फॉरवर्ड एनी सच मैसेज विच इज स्प्रेडिंग हेट्रेड। तो वी should foil their design of these hate mongers, and we should not fall prey to their malicious designs. अगर हम फॉलो भी करेंगे, फॉरवर्ड भी करेंगे, मैं हरी जी को कर रहा हूँ, गुरवीर जी को कर रहा हूँ, वो आगे सो फिर तो उनका they are successful na in their mission. Thank you. I've been told I have time for one final question. I'll make a quick observation before I come to the question. That in my experience, and I'm a free speech absolutist, I've been writing about it for 25-30 years. All laws against hate speech are ultimately used against free speech by the state, always. We have seen that even in recent times with, my friend Mohammed Zubair, who is so fearless in calling out hate mongers, but himself he's got an FIR filed against him. Yeah. So for me, I'm not saying there should be no legislation. All of this is a step in the right direction. We are speaking up in this way. But I feel the real change has to come from within society. Yeah. And, there's an interesting part of your bio, Vikramjit ji, that you were the international president of the World Punjabi Association, or organization, WPO, and you used the phrase Punjabi Renaissance there. And when I read that, I thought that, all right, this is
the positive side of community. This is the inclusive side of community where you come together and, you're building something larger. But there is also an ugly side of community, which is exclusionary. And the thing is, all our faiths, all our religions have this inclusive side in them. But, as Joan Robinson said, whatever you say of India, the opposite is also true. There is this exclusionary, ugly side also. And, we've seen a lot of that with Hindutva in the last Amit ji, few years. all religion, as you said, ये I.K. गुजराल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वी सेट अप दिस वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन. सायदा आपा जी कल बोल रही थी गंगा यमुना तहजीब के बारे में. मेरे को इतनी खुशी हुई. हम 99 में I.K. गुजराल जी ने कहा आप पाकिस्तान जाओ. मैं, कुलदीप नैयर जी, बड़े सुषमा जी, हम पाकिस्तान हर बसंत पे जाते थे. 3-4 साल हो गए. तो व्हाट आई मीन टू से, पंजाबी रेनेसां इज ऑल चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब. कोई रिलीजन पंजाबी, ये जो पंजाब में प्रॉब्लम भी तब शुरू हुई जब एक सेक्शन ने पंजाबी वो अपनी मदर टंग लिखवानी भूल दी. तो पंजाबी इज ए पंजाबी. तो इसलिए जो बात इन्होंने कही, और फिराक गोरखपुरी का इन्होंने बताया कि वो नाम क्या था और वगैरह वगैरह. तो इट ऑल रिलीजन इज परवेडिंग. ये प्रॉब्लम क्या है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. जो गुरु महाराज ने करे काल तखत, वो था कि रिलीजियस शुड बी सुप्रीम, फॉलो द प्रिंसिपल. आजकल देयर इज अ डेडली नेक्सस ऑफ mixing religion with politics, which should be stopped. I'll finish my question because I really want Rakhshanda to have a say in this. And the last part of my question is that when community can be used in such a good, inclusive way, we've unfortunately gone in the opposite direction in recent years in India, but I believe the solution can also come from within. Yeah. So Rakhshanda, what are your thoughts on this, and what do you think people like us can do? And, while it is natural to be fearful and depressed, as you expressed in your book, where can one find hope? And it's for both of you, really. Yeah, I think the one thing that each one of us can do is call out misogyny, call out hatred, call out othering, call out forms of toxicity. Mr. Sahney is a parliamentarian. He can bring bills to parliament. There could be an activist here who can hit the streets. I'm a writer. What do I have? The only commodity I have, the only tool I have are words. So I use words in whatever way I can. But those of you who are having a dinner table conversation with the family and you feel that there is something which is wrong, which is toxic, which is dividing, I think you need to call that out. Whether it's a RWA group, it's a old boys, old alumni group, it's a WhatsApp forward. Mr. Sahney's just mentioned these WhatsApp groups, and the kind of mindless, nonsensical stuff that is floating around in WhatsApp groups, I think that needs to be called out. So instead of this mindless forwarding that we do, I think we become a party to that hate, to that othering. So the one thing, if you were to ask me what we can do as individuals, I think it's to call out, it's to question, it is to speak, it is to have more conversations with each other. I think civil as Rakhshanda ji have said, I little bit differ from her. कि ये बोलती है पार्लियामेंट, ये नहीं है. I was told when I was student that pen is mightier than sword. तो हमें आप authors, बच्ची करकरिया सब celebrated हैं. Everybody is here. Gargi Rawat and Sara, Rahul ji. Pen is mightier than sword. Civic society, we should go, we will not forward the message, this WhatsApp group and all that. अगर हम आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे, we should foil their designs. Then nobody can win us. We should unfollow them, and law will hopefully, in this winter session, this bill, hopefully, I hope, the parliamentarians will vote for the bill. So it is very dangerous. Our children, as Nelson Mandela said, we inherited this world, and it is our duty to hand over to our kids in a much better form than we inherit. अब उनको ये देंगे कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह क्या किसको वर्शिप कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल गा रहे हैं, उसकी डिस्कशन सोशल मीडिया पे हो रही है. Who will buy out? This is obnoxious, And sorry to say, it may suit politicians, but definitely it doesn't suit public at large, civic society at large. Thank you. Beautiful wise words. Thank you so much. Thank you to these esteemed guests. Please buy Love in the Time of Hate magnificent book. आपने marathon runner से sprint दोहराया. Please कभी ऐसा मत कीजिए.